हेलो स्टूडेंट्स। अब हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट वीडियो नंबर 4। दिस इज योर वीडियो नंबर 4 एंड द चैप्टर इज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। So this is the final video related to this chapter. We have already covered in our 3 videos what is democracy. So we tried to cover out the definition of democracy, the exact and detailed meaning of democracy by going through the different features of democratic system. Now we are moving to this particular portion and we are going to deal with why democracy. Why democracy? Why not another form of government? What are the reasons which give us this impression related to democracy that it is the better form of government or best form of government in the contemporary world? तो ऐसा क्या है कि जो डेमोक्रेसी 21st सेंचुरी में इतनी पॉपुलर है कि आज दुनिया में 3/4 ऑफ द कंट्रीज, अबाउट 75% ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, they are following this system of administration which is known democracy. तो अगर हम किसी भी चीज को, किसी पर्सन को, किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी सिस्टम को पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली उसके कुछ प्लस पॉइंट्स होंगे और कुछ माइनस पॉइंट्स होंगे, कुछ वीकनेसेस होंगी, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे। तो यहां पर भी हम डेमोक्रेसी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पढ़ेंगे और कुछ नेगेटिव, और फिर जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो वी विल फाइंड इट आउट कि पॉजिटिव पॉइंट्स आर मोर, advantages or arguments in favor of democracy are more as compared to the arguments against the democracy or disadvantages related to democracy. तो पहले हम इसके disadvantages को कवर करते हैं. The various arguments which are given against the democratic system, what are these? That has been given in your book also. So these are, number one is the unstable government. Unstable government. And they are explaining to you by writing that कि in democracy the governments keep changing. The governments keep changing because in democracy people they will choose their representatives and the political party or the candidates or the leaders whom the people support, they will come in power and they will form the government. But these governments are not permanent. After 4 years or 5 years or 6 years, they have to change, and again elections will be conducted, and at that time possibility is there, if party A was there in the past 4 years or 5 years, then next time party B can come. So governments keep changing also, and in democracy we know that only that party will form the government which has the majority, which has more than half of the seats, half of the number. So sometime no party gets the half of the seats or more than half of the seats, so 2 or more parties they come together and form the government, and this is called your coalition government. So in coalition government often 2, 3, 4, 10, 15 parties come and form the governments, and often they fight, they have arguments with one another, and often because of that arguments some of the parties they withdraw their support and the government falls. So in democracy the government keeps changing, the government remains unstable also. और हमेशा याद रखिए कि अगर गवर्नमेंट बदलती रहेगी, गवर्नमेंट इनस्टेबल रहेंगी, तो कभी भी देश तरक्की नहीं कर सकता, प्रोग्रेस नहीं कर सकता. तो एक आर्गुमेंट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में ये है कि ड्यू टू द डेमोक्रेटिक सिस्टम इनस्टेबल गवर्नमेंट्स कम एंड दे कीप चेंजिंग. और अगर आप इंडिया में भी देखेंगे इन 1990s, हमने देखा कि 1990s में बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनी, जो कोई 1 साल चली, कोई 18 महीने चली, कोई 2 साल चली, और वो बदलती रही. तो इट ब्रिंग्स नेगेटिविटी फॉर द कंट्री, इट ब्रिंग्स इकोनॉमिक लॉस टू द कंट्री. तो इनस्टेबल गवर्नमेंट, देन चेंज इन पॉलिसी, दैट दिस पॉइंट इज कनेक्टेड विद योर पॉइंट नंबर 1. तो आप ये लिखने के बाद इनस्टेबल गवर्नमेंट एंड कीप्स चेंजिंग के बाद लिखेंगे चेंज इन पॉलिसी. तो इसमें ऑब्वियसली व्हेन द गवर्नमेंट्स चेंज, तो policies of the government also change with the change in the government. Suppose Congress party is running our state or country for 5 years and next time BJP comes, so what will happen? The new party will make a new government and it will change all the policies of the previous government or previous political party. तो अगर पॉलिसीज बार बार बदलती रहेंगी तो इट विल ऑल्सो नॉट ब्रिंग गुड रिजल्ट फॉर द कंट्री. तो दिस इज योर पॉइंट नंबर 2.
Point number 3 is low morality, has been written in your book. कि in democracy all the political parties and the leaders want to win the election, and to win the election they adopt every fair and foul method, every right or wrong methods to win the election. They take all the good turns or bad turns just for the sake of power. So in democracy the people, the leaders as well as the political parties, they do not have any morality. ठीक है, very low morality is there. Then the fourth one is the corruption. So the charge of corruption is one of the strong argument against the democracy. कि in democracy many of the political parties and the leaders, political leaders, they involve in corrupt practices. They take wrong decision just to give favor to some particular people or some particular industries, and in return they get a lot of money, lot of support. In this way we can see that in democracy the political parties, they get involved in corrupt activities. So corruption is there. So this is a serious charge against the democratic government. और आप खुद भी आइडिया लगाइए, जब भी हम नेता की बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स की बात करते हैं, तो पहली चीज हमारे माइंड में जो क्लिक करती है वो ये कि ये लीडर्स जो हैं करप्ट हैं. ऑल द लीडर्स आर करप्ट. जनरली हम ये स्टेटमेंट देते हैं कि सारे के सारे बेईमान हैं. तो करप्शन इज देयर. Then delay in decision, this is the fifth argument against the democracy. Delay in decision मतलब in democracy everyone is consulted. Everyone from ruling party to the opposition, and even the opinion of the people is also taken. While taking any decision, while making any law, everyone is consulted. तो जब सबसे सलाह ली जाएगी, नेचुरली डिसीजन जो है वो देर से लिए जाएंगे. क्लियर. तो ये आर्गुमेंट बन जाता है कि इन डेमोक्रेसी एज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स नॉट ओनली टेक द ओपिनियन ऑफ द पब्लिक बट ऑपोजिशन पार्टीज ऑल्सो. सो समटाइम्स डिसीजंस आर डिलेड, और एक डिसीजन जिसे अभी लेना है उसे लेते लेते कई साल निकल जाते हैं. तो दिस इज द आर्गुमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कि इन डेमोक्रेसी डिसीजंस आर नॉट क्विक, और अगर क्विक डिसीजन नहीं होंगे, डिसीजंस देर से लिए जाएंगे तो उसका बुरा इंपैक्ट पड़ता है. तो ये पॉइंट हो गए. इसके अलावा एक और पॉइंट आपकी बुक में लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो who are what is good or what is bad for the country. Generally the common people, they give their vote in the name of religion, in the name of caste, in the name of their region, their area. ठीक है. And rather than giving vote to the honest candidate, they prefer to give vote to the candidate of their religion, their caste, their status, their area, their language. और इसीलिए ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो what is good for the country or good for themselves or what is bad for themselves. So they fall into the trap of the politicians who are very shrewd and cunning. तो एक argument आप वो भी दे सकते हैं. Otherwise these are the 5 arguments against the democracy. Now we are moving to the last portion of your chapter, arguments in favor of democracy. Why, in spite of all these weaknesses, we still believe that democratic system is a far better system than non-democratic country. तो आपका पहला आर्ग्यूमेंट है अकाउंटेबल गवर्नमेंट. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल गवर्नमेंट. और ये याद रखिए, ये वाला पोर्शन एग्जैक्टली आपको क्लास 10th में भी आने वाला है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में. तो अगर आप इस पोर्शन को यहां कर लेंगे तो क्लास 10th में वो ऑटोमेटिकली आपको पहले से ही लर्न होगा. The first argument in support of democracy is that democracy always produces accountable government. Because the government is elected by the people, so government knows that the leader, the prime minister and ministers or chief minister and ministers know that they have to work for the people. And whatever they will do, good or bad, then after 5 years they will go to the people, will show them their report card कि this is the work we have done for you, now you pass us or fail us. So public has the authority to pass the government or fail the government. If public is satisfied with the work, then they will re-elect the government, giving them the passing mark. Or if public is not satisfied, then they will fire them, they will show them the exit door and they will change them with the new government. So democratic government is completely accountable. Now just think about a non-democratic system. Think about monarchy system. If whether the monarch is doing good work or bad work, so he will not bother.
अगर मोनार्क बुरा काम करेगा तब भी वही मोनार्क है, तब उसके बाद उसकी फैमिली का मेंबर अगला मोनार्क बनेगा, अगर वो अच्छा करेगा तब भी वही मोनार्क है। बट इन डेमोक्रेसी इफ द गवर्नमेंट इज डूइंग गुड वर्क देन ओनली इट कैन री-इलेक्ट और इट कैन बी री-इलेक्टेड बाय द पीपल। तो दिस इज अकाउंटेबल गवर्नमेंट की, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल और आंसरेबल। सेकेंड पॉइंट इज इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन। So in democracy the decisions quality is improved। ये पॉइंट आपके इस पॉइंट से कनेक्टेड है। इस एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में डिसीजंस आर डिलेड बिकॉज एवरीवन इज कंसल्टेड, क्योंकि हर किसी की ओपिनियन ली जाती है, ओपोजिशन पार्टी की भी ली जाती है। लेकिन ये एक तरफ नेगेटिव आर्ग्यूमेंट है तो इसका पॉजिटिव साइन भी है, because everyone is consulted in democracy while taking decision, government takes care of even the opposition party and the people, opinion of people also। So naturally when the decision will be taken they will be far better as compared to the decisions taken by monarchy or one party system or dictator, जो किसी को कंसल्ट नहीं करते डिसीजन लेते हुए और एक मिनट में क्विकली डिसीजन ले लेते हैं। तो उन डिसीजंस के कंपैरिजन में ये डिसीजन ज्यादा अच्छे होते हैं, इनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि डिसीजन लेते हुए उनके ऊपर पूरी आर्ग्यूमेंट होती है, डेलिब्रेशन डिस्कशन होता है और कुछ कमियां हैं तो उनको दूर किया जाता है। ठीक है, डिसीजंस आर टेकन आफ्टर प्रॉपर डिस्कशंस। सो इन दिस वे क्वालिटी ऑफ डिसीजन आर टेकन एंड देयर आर लेस चांसेस ऑफ ऑपोजिशन वंस द डिसीजन इज टेकन। एक बार सरकार ने डिसीजन लेके लॉ पास कर लिया तो बहुत कम चांसेस है कि उनका ऑपोजिशन होगा, क्योंकि ऑलरेडी उस डिसीजन की कमियों को डिस्कशन के बाद दूर कर लिया गया है। तो दिस इज योर सेकंड पॉइंट। देन थर्ड पॉइंट इज डेमोक्रेसी रिजॉल्व द डिस्प्यूट इन बेटर वे। रिजॉल्व द डिस्प्यूट, अब आपको डेमोक्रेसी झगड़ों को ज्यादा अच्छे तरीके से निपटाती है। पहली चीज आपकी बुक में भी लिखी और आपको भी याद रखना है कि कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं हो सकती जिसमें झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। Even forget about society, even in a family disputes will be there with a family member। तो अगर ब्लड रिलेशनशिप में डिस्प्यूट हो सकता है एक परिवार में, उनमें भी बीच बीच में किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो नेचुरली किसी कंट्री या सोसाइटी में डिस्प्यूट होना बिल्कुल नेचुरल है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि अगर डिस्प्यूट है तो उसको सुलझाया कैसे जा रहा है, उसको रिजॉल्व कैसे किया जा रहा है। जनरली इन नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम, in majoritarian government, in one party system, generally the people who are in majority they try to, who are more in number, try to dominate the people who are less in number, who are from minority group। और जब ये majority try to dominate the minority, it leads to the conflict, it leads to the violence, it leads to the disputes in the society। But in democracy we know that everyone is treated equally, whether he or she belongs to majority group or minority group। And still if dispute is there, still suppose I have a dispute with another person, then I know the proper procedure to resolve my dispute। I can approach to the judiciary। If we have dispute with the government, again we have the procedure, proper method to resolve our dispute। We can approach to the judiciary, judiciary will hear our argument and the argument of the other party, and finally the dispute will be resolved in a proper manner। So democracy resolves the dispute in a proper manner, but non-democratic countries generally try to dominate those people who are less in number, whether it is monarchy, whether it is a one party system, whether it is a majoritarian government। I hope you understood this point also। Now we are moving to the next point, enhance the dignity of the citizen। ये same point आपको क्लास 10th में भी है, enhance the dignity and freedom of the citizen। तो इसमें enhance का मतलब होता है dignity को बनाना, dignity लोगों की respect को, उसको एनहांस करना, पहले से ज्यादा बढ़ाना और उसको मेंटेन करके रखना। वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में प्रॉपर पॉसिबल है, बट नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में वो पॉसिबल नहीं होता। कैसे आप ये बताएंगे? क्योंकि इन डेमोक्रेसी ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वली, whether the person belong to one religion or another person belongs to majority group or minority, one caste or another caste, male or female, all are treated equally। And obviously when everyone will be treated equally, so it will maintain the dignity of the
citizen, the dignity of the citizen will be maintained. तो ये पॉइंट हो गया। और आप इसमें ये भी आप एड ऑन कर सकते हैं कि इवन दोज पीपल हु आर weaker section due to the historical reason, just like in our country, some of the community, social community groups, they were very backward due to their historical exploitation. So these weaker sections are given some special arrangement by the democratic government and their constitution to maintain their dignity and to enhance their dignity. Like weaker section, scheduled castes and scheduled tribes in our country, they were given the प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन, ताकि वो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में आ सके, उनको भी तरक्की के बराबर मौके मिले। और रिजर्वेशन इसलिए किया गया कि काफी टाइम तक जो मौके उन्हें नहीं दिए गए थे पास में, उनको स्पेशल अरेंजमेंट करके वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए प्रोग्रेस करने की। इन द सेम वे द फीमेल्स ऑल्सो, वीमेन ऑल्सो प्रोवाइडेड सम स्पेशल प्रोविजंस, जैसे डाउरी एक्ट बनाया गया ताकि कोई विमेन की डिग्निटी को से कॉम्प्रोमाइज ना करे, और कई तरह के स्पेशल प्रोविजन किए गए। लोकल बॉडी में 1/3 सीट्स को रिजर्व किया गया इंडिया में, ताकि विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़े, उनका पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल लाइफ में बढ़ेगा, तो उनकी डिग्निटी अपने आप ही मेंटेन भी होगी और एनहांस भी होगी। सो थ्रू दीज एग्जाम्पल्स यू कैन क्लियरली सी दैट द डेमोक्रेटिक सिस्टम एनहांस द डिग्निटी ऑफ इट्स सिटीजन। Last one, give room to correct mistake. This is the last point. Democracy also provides room to the democratic governments to correct their mistake. ये पॉइंट आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। Improve the quality of decisions. क्यों मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में डिसीजन लिए जाते हैं सबको कंसल्ट करके, सबसे ओपिनियन लेके। लेकिन सपोज करिए सबसे ओपिनियन लेने के बाद भी सरकार ने अगर कोई ऐसा डिसीजन लिया है जो कि पब्लिक को नहीं पसंद आया है, तो ऐसे में पीपल कैन पुट द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू रोल बैक देयर डिसीजन, टू चेंज देयर डिसीजन। ठीक है, तो इन डेमोक्रेसी इवन इफ मिस्टेक्स आर कमिटेड, और मिस्टेक्स कमिट करना ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रोवाइड्स अ प्रॉपर मेथड, प्रॉपर चैनल टू करेक्ट द मिस्टेक मेड बाय द गवर्नमेंट। If government has taken any wrong decision, then the people will force the government to roll back or take back their decision. If government changes its decision, so in a way it is correcting its mistake. If government does not like to change the correct the mistake or change their decision, then people change the government. That has been written. तो इस तरीके से डेमोक्रेसी में अगर सरकार कोई गलती करती है और पब्लिक उसके अगेंस्ट में आ जाती है, तो हर गवर्नमेंट को पब्लिक के पास जाना है अपने वर्क का हिसाब करने के लिए। अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, तो उनको नेचुरली अपनी कोई रॉन्ग डिसीजन को चेंज करना पड़ेगा पब्लिक प्रेशर में आकर। नाउ थिंक अबाउट द नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, थिंक अबाउट अ डिक्टेटरशिप। डिक्टेटर इफ हैज टेकन एनी डिसीजन, देन इट इज अ टॉपिक ऑफ ईगो फॉर डिक्टेटर, कि वो अपना डिसीजन चेंज नहीं करेगा। उसके लिए वो चाहे जितने मर्जी लोगों को मार दे, जेलों में डाल दे, लेकिन उसने जो डिसीजन ले लिया तो उसकी ईगो कहेगी कि अब मैं इसको चेंज नहीं करूंगा। बट इन डेमोक्रेसी ऑल द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज टू डिपेंड ऑन पब्लिक ओपिनियन। सो इफ दे मेक एनी रॉन्ग डिसीजन, इफ दे मेक एनी मिस्टेक, दे रेक्टिफाई देयर मिस्टेक। सो डेमोक्रेसी allows room or gives room to the government to correct their mistake. I hope you understood all these arguments in favor of democracy, and with this your chapter is complete now. One page is there that is making a difference between your डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो उसमें सिर्फ इतना है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पब्लिक, ऑल पीपल सिट टुगेदर इन अ कंट्री एंड टेक डिसीजन बाय देमसेल्व्स। In today's time where the population of even the smallest country is in million, so it is not possible to take the decision by gathering all the people together. So we do not have direct democracy in the world today. Few examples are there in your book like Switzerland. कुछ हद तक थोड़े मामलों में स्विट्जरलैंड प्लेबिसाइड करवाता है, रेफरेंडम करवाता है, पब्लिक से पूछता है कि आपको ये डिसीजन पसंद है या नहीं। जस्ट यू हैव टू गिव द आंसर इन यस और नो, वोट करके बोलिए यस और नो। तो वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ एग्जाम्पल हैं स्विट्जरलैंड में।
अदरवाइज दुनिया के अधिकतर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है. व्हाट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी? We choose our elected representatives and those elected representatives they run the government in the name of people. So that is indirect democracy. तो इसके साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है. आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.